पंजाब में यानी भारतीय पंजाब में अमृतपाल के ऑपरेशन के हवाले से एक बार फिर खालिस्तान का मुद्दा वर्ल्ड लेवल पे किसी न किसी हद तक सुना जा रहा है। क्या आज की सिचुएशन वैसी ही है जैसी 80s में थी, या फिर सोशल मीडिया की वजह से ये जो थोड़ी बहुत हम आवाज़ सुन रहे हैं वो है? और इसके साथ साथ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बुक जो GBS सिद्धू साहब की है, खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये सारी बातचीत हम प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ कर रहे हैं, जो बहुत समय बाद हमें वक्त दे रहे हैं। प्रोफेसर धीरज शर्मा IIM रोहतक के डायरेक्टर भी हैं और बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी होने के साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में इस वक्त बहुत ही अहम नाम है। मैं स्वागत करता हूं रोहतक हरियाणा से प्रोफेसर धीरज शर्मा जी का। सर नमस्कार। आपकी बातें जब भी हम इन पर्सन या वैसे वर्चुअल लेवल पे सुनते हैं तो हौसला होता है कि रैशनैलिटी को आप इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के साथ आगे लेके चल रहे हैं। सर ये जो अमृतपाल का मामला है जो हमने यहाँ पे कनाडा में बैठ के सुना, और कुछ कैनेडियन पॉलिटिशियन भी इसके चक्कर में अपनी सियासत को चमका रहे हैं, ये कितना सीरियस है ग्राउंड पे? मुझे ऐसा लगता है जी कि आई थिंक इसमें एग्जेजरेशन ज्यादा हैं, असलियत थोड़ी कम है। द होल नोशन ऑफ दिस सो कॉल्ड movement is a non-issue at the present time. The Sikh community in India particularly is a very progressive community, very broad-minded community. They have progressed in various fields. As a matter of fact, during the COVID time, they were at the forefront of offering services to anybody and everybody. And this notion of Khalistan is not something that has any buyers in the mainstream. देखिए बात यह है कि भारत इस वक्त इंटरनेशनल स्टेज पे, वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है, और भारत इस वक्त खालिस्तान की बहस से बहुत आगे जा चुका है। भारत से दुनिया ये एक्सपेक्ट करती है कि क्या भारत खामोशी से यूक्रेन और रशिया के बीच में कोई मीडिएशन कर सकता है, या फिर चाइना की ये ख्वाहिश है कि भारत चाइना रूस ब्लॉक में आए, और रूस की भी यही ख्वाहिश है, और भारत चाइना को भी टक्कर दे रहा है और कह रहा है कि आप हमारे साथ मैच नहीं कर सकते। तो भारत के इस लेवल का जो इस वक्त सिनेरियो है, इसमें सोशल मीडिया पे जब कभी हम देखते हैं कि इंडियन हाई कमीशन के बाहर यूके में कोई हंगामा होता है, सैन फ्रांसिस्को में कोई हंगामा होता है, तो ये चीज़ें क्या भारत की इतनी बड़ी तरक्की की राह में कोई रुकावट बनती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि एंटी इंडिया फोर्सेस जो हैं वो हर एक छोटा से छोटा मौका चाहेंगे कि उसे कैपिटलाइज करें। मैं पर्सनली उस वक्त यूके में था, एक दौरे पे था, मैंने खुद इस इवेंट को देखा है रिसेंट, जो लंदन में जो इंडियन एम्बेसी के बाहर है, वहां कितने लोग थे? A few hundred people. I mean, UK enjoys the presence of a very vibrant Indian community and very vibrant Indian Sikh community. And Sikhs are hundreds of thousands of Sikhs live there, and ये जो छोटा सा एक small group, I don't know what is the achievement क्या है? I mean, आज के दौर में तो आप देखिए तरह तरह के लोग टेलीविजन पे आ जाते हैं, हर तरह के लोग टीवी पे आ रहे हैं। It has become 24-hour news channel actually is no longer reporting news. It has to generate news to fill up the hours which are there. There used to be a time when we used to say that everything that happens around the world has to fit the size of a news slot of 1 hour. Today, you have 24 hours and you have to fill the news slot. So I have seen it myself. I don't believe that these events need to be
need to be highlighted, and I think they have been highlighted enough. I can tell you with great deal of certainty, I have had interactions with students in Oxford University, in Cambridge University, students of LSE, people in Imperial College, students in Queen Mary University. I interacted with various people in various places, and I happened to find that although there is a significant anguish in people for various other reasons, but there are really not very many ardent supporters or buyers for a separate sixth state. जी, ये बिल्कुल बात आपकी हमें ग्राउंड पे नज़र आती है। आपने पीछे कहा कि भारत में जो सिख कम्युनिटी है वो बहुत प्रोग्रेस कर चुकी है, और वैसे भी जब हम इसको कंपेयर करें आज की सिचुएशन को 80s के साथ, तब भी ऑनेस्टली कोई बहुत बड़ी मेजॉरिटी तो सेपरेटिस्ट व्यूज़ की हामी नहीं थी, लेकिन बहरहाल एक वायलेंट एक प्रोसेस था जिससे भारत गुजरा, इवॉल्व हुआ, और इस वक्त बहरहाल डिफरेंट सिचुएशन है। थोड़ा सा हमें सिनेरियो बताइए प्रोफेसर धीरज साहब कि 80s की सिचुएशन कैसे डिफरेंट थी आज की सिचुएशन से, या आज की सिचुएशन कैसे डिफरेंट है 80s की सिचुएशन से? देखिए, ऐसा है कि अगर आप इसके जेनेसिस पे जाएं, आज जो जिसे कहते हैं ना कि यू हैव टू क्रिएट, वी आर टुडे इन द बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। अगर आज आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो लोग कहेंगे कि the genesis of the separate state or separate nation for the Sikhs had its roots in 1940s, और आपको ऐसे भी मिल जाएंगे दो चार लोग कहने वाले, और इसके साइटेशन भी मिल जाएंगे एक दो spurious, but the actual movement so called started only in the 70s. Owing to certain disgruntled politicians from India moving to UK and finding, because they were politicians having lost elections in India, found roots there and were able to galvanize people there because of the emotions that those people had connected with India. ये 1970s की बात है, and you know the people that I'm talking about, and they had developed deep linkages with Pakistan. Pakistan had freshly come out of the severance of its very important territory, which is Bangladesh today, and they really wanted to exact revenge from India, and they found individuals who were disgruntled and were in London, and they were invited. It is a part of historical record, and Mr. Sidhu's book also talks about it, that they were invited to Pakistan, they were given financial support, they were given enough resources for them to go around the world and talk about Khalistan and how the Khalistan state was needed. Now let me remind you, we are talking of 70s, when Punjab was one of the most prosperous states in India owing to Green Revolution and the White Revolution coming to Punjab from Gujarat. Industrially as well, Pakistan, the state of Punjab in India was doing very well. So technically there were no real reasons for anybody to go and say कि हाँ जी, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि साढ़े नाल धक्का हुआ है, वो धक्का किसी के साथ नहीं हुआ था वहां पर at that point, and people were doing fine. There was no I would say difficulties. People from Bihar, people from Eastern UP, people from Bengal, Odisha would come to work in Punjab because the wages were very, very high for the farm workers. So, but these people who were disgruntled and they found shelter in London and political asylums in London and got support of Pakistan, these particular politicians then went to US, where in 1970s an advertisement was placed. Mind you, it was not a newspaper article, it was an advertisement in the newspaper for Khalistan, as a result of which millions of dollars were collected by these ex-politicians. And the millions of dollars in the name of Khalistan were, again,
There are historical records available of how that money has been appropriated, misappropriated. It is all there. But they got the money and they got the support of Pakistan. And Pakistan, it is known that then started to provide direct and indirect support to this movement. And at that point in time, the situation had become really disturbing. And unfortunately, it was allowed by then government to fester a little bit longer than it should have. And Bhindranwala at that point in time had become a cult, and there was a great deal of following. And people at that point in time did not have video cameras and social media and cellular phones. These were all legends and folklores. I having lived in Punjab during that time, there were legends that his hands are longer than his knees and that he was immortal. These were all legends and folklores were there. And there was a following because at the end of the day, we were rural society in Punjab at that point in time. And there was considerable following. Let me apprise you. This is contrary to what is today. The situation was so grave that there was a DIG of Punjab Police who was shot dead within the premises of the precincts of, Harmandir Sahib, Golden Temple, and the body could not be picked up. It was hours before intervention from the highest level in the state was made and the body was recovered. This was a serving DIG. The situation was very grave. There were hit lists which used to get published in the two leading newspapers, Ajit and Jagbani at that point in time. The newspaper Punjab Kesari, which used to write scathing articles. The editor of Punjab Kesari, Lala Jagat Narayan, was shot dead in broad daylight. So this was a very, very difficult scenario. But then came Operation Blue Star, and Operation Blue Star really hurt the sentiments of the Sikh population because there were civilians inside, there were people inside, and army was called in, and army operates in a particular manner. They have their own ethos, and they were given a go-ahead by the dispensation of that point in time. But this was a sentimental blow to the Sikh community. It is an unfortunate and most unfortunate thing to have happened, but it did happen. And the situation was grave. I don't know, I can't comment. I'm not an expert to comment on the real way in which the operation was carried out, but it was carried out, and it resulted in death of hundreds of people, but there were hundreds of trained militants. And it wasn't so that this was an unprepared, group of people inside. Major General Shabik Singh, again from the Indian Army, who was court-martialed by the Indian Army, had gone and joined Bhindranwala at that point in time, and he had spent time there, and he was a major general after all. So he was able to train the troops inside, fortify the positions with latest, armor and latest artillery, and he had all that was necessary to put up a brave front with him. And so it was a very, 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 very sad episode in the history of India that this did happen. However, as an outcome of that, Mrs. Indira Gandhi was assassinated just, I think, about 4 or 5 months later. And as an outcome of that, almost, I don't know, the numbers vary, anywhere between 3,000-4,000 Sikhs to about 10,000 Sikhs were murdered by a complete chaotic situation, complete breakdown of law and order. And there was a systematic manner in which people alleged some of these things happened. And this further, really hurt the Sikh community in a very, very deep and profound manner. And I must tell you, rightly so, because you see, thousands of Sikhs suffered the assassination of Srimati Indira Gandhi, and there was a chaos for a few days, and later on, when the situation normalized, these are events which do not go away easily. So again, now it's a concatenation of events. Now the next event is
in order to avenge the death of these thousands of Sikhs, now you have militant forces which come into play. Some of them are leftover organizations of the erstwhile, the regime, I would say, or erstwhile dispensation. Some of them were, newly formed groups. The All India Sikh Student Federation also came into play. Babar Khalsa came into play. Numerous other organizations became more and more evident. And so Punjab and Punjabis, I must tell you, suffered the most. I must tell you that this time period of 1984 till about 1994, this 10-year period, the biggest sufferer of all of this chaos was Punjabis. And it's not just the Sikh community, it is the Hindus as well. I can tell you that at that point in time, these hit lists used to be all Hindu, administrators, bank workers, and so on and so forth, that you leave Punjab by so-and-so date or otherwise you will be dealt with. And not just that, I mean, there are bigger instances like the instance which took place in 1990 in Lalaru, which is close to Chandigarh, just I would say about 30-40 kilometers from Chandigarh, where Hindus were brought out of a bus and were massacred. I think that number would have been close to 80, 90. Unofficial number would be more than 100. A couple of buses were there. So I think the unofficial number is, I think, about 50, 60. Then the second instance was in 1991 when a train, going to Dhuri in Punjab and was stopped near Ludhiana. It was actually Ludhiana district, but it was away from the Ludhiana railway station, going towards Dhuri, which is about 40 odd kilometers from Ludhiana. And the train was stopped, and the official numbers are about 80, 90, but I think the number would have been. And I must tell you one thing, which again, I'm an eyewitness to this particular incident, because we lived in Ludhiana and we heard these gunshots, and as young kids, we all sort of wanted to see what was going on. So we didn't see the actual shooting, but we actually saw the aftermath of it, where there were bodies lying around. And so in essence, there were atrocities on Hindus, Sikhs, and this was a bloody time for the state of Punjab. Economically, Punjab became in ruins. From law and order standpoint, there was chaos. People today, the youth today, cannot even imagine that how many days of curfew would have been there in Punjab. And double riding on motorcycles, I don't even remember, for almost a decade or so, one could not have double riding, a pillion riding on a motorbike. Things used to shut down with the sunset. But Punjab and Punjabis have a history of overcoming all of this. This is not the first onslaught on Punjab and Punjabis. They have a history of overcoming. And I am very proud of the fact that since early 90s till now, which is a period of about 30 years, Punjabis are all over India, working hard, moving beyond this chaos. Forgive and forget has been part of their culture. They have worked hard, and they are making their presence felt everywhere in the world. Even today, so much so is the bonding between the Sikhs and Hindus. We recently did a survey just about 3 years ago, a survey we did. And the marriages between Hindus and Sikhs are quite common. As a matter of fact, in urban areas, these marriages are so frequent and so common that nobody even glares at it. It's a common phenomenon. Hindu temples, you will find Sikhs in Hindu temples, and I can tell you there would be hardly, according to the survey, you would be surprised at the number. 97% of Hindus have gone to a Sikh Gurdwara at least once in their lifetime. So just imagine. So it is a common phenomena for them to visit each other's religious places. And I have been calling for this. I think
Punjab needs to go back to the old tradition where the Hindus used to make the oldest son the Sikh, and that's how the numbers of Sikhs increased substantially. I think this number quadrupled between 1800 and 1900. The reason is following, and I think we probably need to go back to that tradition to strengthen ties between two communities. So I must tell you that 30 years from that time, no Amritpal or any other person can bring the communities divided. There is absolutely no chance of casting or putting any wedge between the communities. They're very thick, they are intertwined, and Sikhs have considerable respect for Hindus. Hindus have a lot of respect for Sikhs, and they live together peacefully. And consequently, I can tell you in one sentence that the situation of 1980s and the situation of 2023 has no parallel whatsoever. They are completely different. You said that the situation in 1980s and situation in today's India in 2023 is unparalleled. Absolutely it is. लेकिन धीरज जी, हम अगर देखें इस बात को, जैसे आपने ओरिजिन की बात की, ये मूवमेंट कैसे ओरिजिनेट होती है, पाकिस्तान के टूटने के बाद वहाँ से एक रिवेंज की एक लहर आई जिसने कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को, वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाले एलिमेंट्स को ट्रेन किया. आपने GBS सिद्धू जी की बुक का जिक्र किया, मैंने भी जिक्र किया. उन्होंने अपनी बुक में ये बात भी लिखी कि किस तरह पाकिस्तान ने अपना बांग्लादेश का जो बदला था चुकाने के लिए खालिस्तान की तरफ रुख मोड़ा. मगर उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर की जो इंटरनल कंपल्शंस थी, वो भी सिद्धू साहब की बुक खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी में है कि उनके मुताबिक किस तरह कांग्रेस ने वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को पॉलिटिकली क्रिएट किया और उनको फिर क्रश करना था ताकि अपने आप को पॉलिटिकली पॉपुलर किया जाए. लेकिन उसके बाद चीज़ें, आपने अपनी बातचीत में कहा कि चीज़ें फिर बदलती गईं और चेन ऑफ सीक्वेंस में ये हुआ कि ये हुआ है तो उसके बदले में ये होगा. फिर हमारे इधर कनाडा में 1985 में एयर इंडिया का वो खौफनाक जो बॉम्बिंग का वाक़या हुआ. उस बॉम्बिंग में जो एयर इंडिया को बॉम्ब किया गया है, जो कि उसमें 250 के करीब कनेडियंस की डेथ हुई है. इंडियन तो उसमें सिर्फ 24 थे या 25 थे. नहीं, वो कनेडियन, मोस्टली कनेडियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन थे. हाँ, बट मैं वही कह रहा हूँ कि वो इसलिए हमारी कनाडा की सरकार को फिक्र नहीं है क्योंकि वो कनेडियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन थे. उसे भूल गया है कि such a dastardly event has been forgotten. Right. I think those innocent people, उन्होंने किसी का क्या कसूर किया था. आप ये देखिए कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बिना पंजाब की एक खासियत है जी, मैं पंजाबी हूँ. जी, मैं भी पंजाबी हूँ जी. पंजाब की एक खासियत है कि पंजाब में आप यू कैन स्टार्ट अ मूवमेंट, यू कैन नॉट कंट्रोल अ मूवमेंट. राइट. तो KBS सिद्धू साहब यही कहते हैं कि इसको एक चाबी दी गई थी और वो कंट्रोल नहीं हो पाई. ये थोड़ी फितरत है पंजाब की कि आप वहां पे मूवमेंट को एक साथ आप पंजाब की, आप देखिए हिस्टोरिकली देखिए ना. See, if you see the history of the India during the British times, तो पूरे इंडिया में या तो जब इलेक्शंस होनी शुरू हो गई या कांग्रेस पार्टी थी या मुस्लिम लीग के कुछ छोटे छोटे इलाके मुस्लिम लीग के थे. एक ही बड़े सूबे में है जहां पे ना कांग्रेस की सरकार थी ना मुस्लिम लीग की सरकार थी, वो था पंजाब. वहां पर यूनियनिस्ट गवर्नमेंट थी. They had communists here at that point in time. चौधरी हयात टिवाना जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, कम्युनिस्ट थे वो. तो ये एक डिस्टिंक्ट एक टेक्सचर ऑफ पीपल है. आई थिंक वी आर फेलिंग टू अंडरस्टैंड द टेक्सचर ऑफ पीपल ऑफ पंजाब. People of Punjab have a unique texture which has to be interpreted, which has to be understood to come to a resolution of these problems. Only a Punjabi can understand the texture of people of Punjab and can understand the nuances. Real issues क्या हैं? Real issues ना तो
खालिस्तान है ना खालिस्तानी स्टेट है। रियल इशू आइडेंटिटी इशू है, रियल इशू डेरा वाला इशू है, रियल इशू अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। रियल इशू ये है कि यहाँ से लोग जाकर यूके में और कनाडा में जाते हैं, और आप लोगों से पूछें, अभी मैं जाके आया हूँ, और वहां पर जाकर लोगों को जो स्ट्रगल करनी पड़ रही है, और देन दे बिकम फर्दर डिस्ग्रंटल्ड। रियल इश्यूज वो हैं। पंजाब में जो, आई मीन, इफ यू वर टू डिफाइन द स्टेट ऑफ खालिस्तान, आप कहाँ उसकी डेफिनेशन देंगे? पंजाब तो ऑलरेडी खुद मुख्तार है। देश से अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। भारत की हर स्टेट सेल्फ डिटर्मिनिस्टिक है। हमारे यहाँ 1992 से कॉन्स्टिट्यूशनली पंचायती राज है। पंचायती राज का मतलब है कि बेसिक स्कीम्स ये वो उनकी डिलीवरी, उनका पार्टिसिपेशन पंचायत करती है। पंचायत कौन इलेक्ट कर रहा है? पंचायत वहां गांव के लोग कर रहे हैं, उनकी पंचायत बनती है। उस पंचायत में रिजर्वेशन भी है, और जेंडर एज वेल एज कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, हर तरह का रिप्रेजेंटेशन है। दोज आर द पीपल जो ग्रास रूट के ऊपर लगे हुए हैं, एंड दे आर द बेस्ट एग्जांपल ग्लोबली ऑफ सेल्फ डिटरमिनेट गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ तो पंजाब में आप चले जाइए, पंजाब का जो एक सरपंच है, जो पंजाब का सरपंच है, इज अ वेरी पावरफुल पर्सन, इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। वो एक लोगों के बिहेस्ट के ऊपर अपना रिप्रेजेंटेशन करता है, और बड़ा वसिफरसली रिप्रेजेंटेशन करता है। सो वी हैव सेल्फ डिटरमिनेशन। अगेन आई गो बैक टू द बुक ऑफ केवीएस सिद्धू जी। केवीएस सिद्धू जी ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट ये कहा है, वही कि मूवमेंट तो इनिशिएट कर दी होगी लोगों ने, at the behest of support received from various angles, inside outside। पाकिस्तान की सपोर्ट से, मैं पढ़ रहा था अपने नोट्स में कि चौधरी ज़हूर इलाही हुआ करते थे, एक जमाने में पाकिस्तान के लीडर थे। उनके साथ फोटोग्राफिक एविडेंसेस अवेलेबल ऑफ द देन सो कॉल्ड खालिस्तानी लीडर्स। जियाउल हक के साथ मिनट्स ऑफ मीटिंग अवेलेबल हैं ऑफ द सो कॉल्ड खालिस्तानी लीडर्स। तो उनको सपोर्ट मिल गया। और उसके बाद जी जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ 1971 13 अक्टूबर 1971 में, आपको एग्जैक्ट डेट दे रहा हूं, कि डिस्कशन हुई है कि वो जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स में, जाकर वहां पर डायस्पोरा को वो आगे बढ़ाएंगे। तो उनको सपोर्ट कहां से मिल रहा है वहां जाने के लिए? पाकिस्तान दे रहा था। सो यू सी, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है कि देयर इज नो सपोर्ट, बट द हार्ट ऑफ द मैटर इज Punjabi people of Punjab have a unique texture. They are very emotional people. They are very hardworking, and when people will finger them, will tweak them, they will come back very strongly. And my submission is through your channel is that people who are dealing with these issues need to deal with them a little bit more sensitively. There are various elements which are involved. And people are very, very, very emotional. At the present time, I believe it is the referendum 2020, which was, one of the things. I think we have not dealt with it, and it's my view. The day we recognized and brought it on television, the membership of referendum 2020 increased by 1,000 times. There were 20 people. Once you come on television, once you get recognition, once you get blacklisted, it's a common tendency. I mean, you blacklist a movie, more people will watch it. So it's the same phenomena. So I think the dealing could have been a little bit different. जी, मैं ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਬੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਬੀ ਹੁਣ ਢੁੱਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਮਿੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਹਿੰਦੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚਾਬੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਖਿਲੌਣੇ, ਕਿ ਚਾਬੀ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚਾਬੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ, ਚੂँਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਟਰੂਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰੋ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦਾ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ।
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 20-25 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਚਾਬੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੱਲੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣੇ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗਾ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਦੀ ਲੋਕਲ the state government. Now, the larger point that you are making and that you're alluding to, how quickly this will finish, I think it is already losing steam. Something new is going to come up. IPL has started. People will start watching IPL, and I have been to Punjab very recently. I have traveled through Punjab. I don't see anything on the streets. There is absolutely nothing. Shops are open, businesses, everybody goes to work. So from a distance, it appears, and it is in the interest of people, I must tell you. At the expense of sounding presumptuous, I think oftentimes, the politicians abroad, in other nations, play vote bank politics because it's a very sensitive issue. और दूसरा, मैंने ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, $20 ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $20 ਫੜਾਈ ਦੇਗਾ ਜੀ। देयर इज नो, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਓਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਪ ਸਮਬਡੀ ਆਊਟ, ਲੈਟ ਮੀ ਗਿਵ $20। ਐਂਡ ਦਿਸ I would say out of 100, I would say about 90 people from Punjab would hand out. Now, if you go to a typical Gurdwara in the GTA area, which is the Greater Toronto, जिसे Greater Toronto area बोलते हैं, उसमें आप गुरुद्वारे में चले जाइए तो संगत जो होती है वो 500 आदमियों की संगत तो 1000 आदमियों की संगत भी हो जाती है। 500 आदमी इकट्ठा हो रहा है, $20 is $10,000 on a Sunday afternoon. So you can collect towards what end? Towards an emotional end. Okay, you are all emotional. What is the outcome desired from that $10,000? Nobody knows. Nobody's concerned about the outcome. It's like a sadqa. It is like a charity. It is done. So my submission to the viewers who are watching this in Canada and in the UK or in India, I think this unbridled funding, it could be dangerous, and one has to really view some of these things with a little bit of more cognition and application of mental faculties. जी, आज हमने बातचीत ज़्यादातर प्रोफेसर धीरज भाई की खालिस्तान की मूवमेंट के ओरिजिन के हवाले से, और अगर उसके कोई नाते रिश्ते आज के ज़माने में बनते हैं तो उस हवाले से। मगर मैंने शुरू में कहा कि भारत बहुत आगे जा चुका है इन इश्यूज़ से। अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो में भारत को देखते हैं तो भारत तो ये काम भी कर रहा है परहैप्स बिहाइंड द सीन कि किस तरह यूक्रेन और रूस के बीच में बातचीत करवाई जा सकती है। I2U2 का बराह रास्त हिस्सा है, यानी इंडिया, इज़राइल, UAE एंड यूनाइटेड स्टेट्स, क्वाड का बराह रास्त हिस्सा है, और इंटरनेशनल लेवल पे भारत इस वक्त प्ले कर रहा है। तो अगर आज की हम बातचीत कंक्लूड करें आपके साथ, तो इस बड़े सिनेरियो में भारत आपको और कहाँ आगे जाता नज़र आ रहा है? अगरचे ये बातचीत मेरी ख्वाहिश होगी कि अगले हफ्ते में आपसे तफसीली करूं, मगर आज हमें छोटी सी ग्लिम्स दीजिए कि भारत
इस बड़े सिनेरियो में अब आगे कहाँ जा रहा है? देखिए, G20 की प्रेसिडेंसी के तहत भारत रशिया यूक्रेन में जो सिचुएशन है उसके ऊपर कुछ कॉमन ग्राउंड पकड़ने का, कॉमन ग्राउंड लाने का भी कोशिश करेगा, और ये मुझे लगता है कि इसमें भारत को सफलता भी मिलेगी। दूसरा, मुझे लगता है कि इकोनॉमिकली अगर आज आप हालात देख लें यूरोप के और इवन यूएस के, तो मुझे लगता है कि भारत एज अ मार्केट, भारत एज एन इनोवेटर, भारत एज अ टेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल हब विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट अगर एक पॉइंट पे अगर आप मुझसे कहें तो मैं इसके ऊपर आर्टिकल भी लिख चुका हूं, वो आ जाएगा अगले 2 या 3 दिन में। भारत का अगला जो कदम होना चाहिए वो है कॉमनवेल्थ। Commonwealth में 56 nations are there, and it traditionally was headed by the monarchy of UK. But recently, I have noticed that on the website as well as other forums, changes have been made. And in 2018, it was declared that any head of Commonwealth will now be through the consent and selection by the Commonwealth member nations. तो 56 नेशंस में मेरे ख्याल से अगला स्टेप जो है 2024 में शुड बी कॉमनवेल्थ हेडेड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, एंड दैट आई बिलीव शुड बी द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड फॉर इंडिया, heading 56 nations Commonwealth and creating more synergy between the 56 Commonwealth nations and leading them for greater economic development, greater development for youth and innovation. इस सारी सिचुएशन में हम एक और भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट देख रहे हैं। गुज़िश्ता 20-30 साल के अरसा में हमने देखा था कि भारत वेस्टर्न वर्ल्ड के आगे जिस तरह अपरेंटली अपने आप को सबमिट कर लेता था, किसी मसला पे खामोश हो जाता था, बात नहीं करता था, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी नहीं है। सो मच सो अमेरिकन्स रजीम को भी, चाहे वो बाइडन जैसी रजीम जो भारत के साथ बहुत फ्रेंडली है, मगर वहाँ से भी कोई ऐसी बात भारत को महसूस हो तो भारत उसका तकड़ा जवाब देता है। अभी यूके के जो हाई कमिश्नर हैं भारत में, उनको भी समन किया जब ये इशू भारत की एम्बेसी के बाहर यूके में लंदन में हुआ, और फिर कनाडा के साथ भी भारत अब खुल के आंख से आंख मिला के बात करता है। और ये रवैया भारत का अक्रॉस द बोर्ड है, चाइना हो, वेस्टर्न वर्ल्ड हो, दोस्ती अपनी जगह पे, मगर अपने इंटरेस्ट पे भारत बहुत अब फर्मली एड्रेस करता है इश्यूज़ को। ये बात हमें कनाडा में बैठ के नज़र आ रही है या आपको भी नज़र आ रही है? अगर आपको भी दिख रही है तो आगे ये मामला कैसे और डिटरमिन्ड तरीके से चलता नज़र आ रहा है आपको? India is now the 5th largest economy in the world. It is growing at about 6.5%. It is likely to touch 7%. But even with conservative numbers, it will come to around 6.5%, which is remarkable. Number 2, we have human resources unparalleled of any country in the world, a knowledge workforce unparalleled. Therefore, it is only opportune for India and time for India to have the best diplomacy. And we are fortunate that our diplomatic efforts have really been very, very strong and forthcoming in the last few years. We have seen that we have forged new relationships, we have strengthened old relationships, and we are now nurturing those who have not found a way to make relationships to come into the foray of joining bigger relationships between nations. India, I believe the way I see it, is not going to be aligned. And these alignments are something that India and Indians don't believe in. We are, quite forthright with the way we conduct our business with various nations, the way I can interpret, the way I can read, the way I can see. And I had analyzed some 56 odd tours of Honorable Prime Minister that he had taken. I could not analyze all of them, but 56 I had analyzed. And every time they go with an agenda. So I believe that it is business as usual. It is not just, posturing.
So I think that is a very big difference, that we are non-aligned and we are not posturing anymore, and we are taking steps which are in the betterment of our nation. It's very easy to sell out a nation, but it's very difficult to take a position which is getting, I would say, duressed. And every day the world exacerbates India's duress, and India fights it out. हमें मालूम है कि आप बहुत बिज़ी रहते हैं, आपको रहना भी चाहिए बिज़ी। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं। मैंने ख़ुद अभी रिसेंटली आपके इंस्टीट्यूट का विज़िट किया, और आई सल्यूट यू एंड योर टीम कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतने बड़े इंस्टीट्यूट को चलाना आसान काम नहीं है। मगर फिर भी हमारी आपसे विनती है कि आप हमें कुछ ज़्यादा वक्त दिया करें, और आपकी अपीयरेंस हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आखिर में ये बताइए कि आज की कन्वर्सेशन में कोई बात आपको मिस होती नज़र आई हो तो प्लीज़ ऐड ऑन दैट। मुझे ये लगता है कि द इंडियंस इन पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी एंड पोजीशंस ऑफ इम्पोर्टेंस एंड इंडिविजुअल्स हु आर थिंकर्स एंड प्रोफेसर्स एंड एमिनेंट पीपल, particularly in the Western world, must really look at positives more so than the negatives. I think we are, every nation has got problems, and it is good to be critical. We must criticize, but I think we must also at the same time look at the work that has been done, and we've done a lot of work. Please visit India and see for yourself the progress that we have made in terms of roads, electricity, gas cylinders, immunization, hospitals, and in the corporate world. I can assure you that you'd be happy with the progress that India has made. I mean, there are shortcomings, there are developmental needs, but we're still, the pluses are more than the minuses, I must tell you. So I reach out to all those abroad to please continue to be critical if you wish to, but at the same time recognize the good work done by India and Indians. आपने एक बात कही थी कि इंडिया बहुत आगे निकल गया है। मैं क्लोजिंग सेंटेंस अपनी तरफ से ये बोलना चाहता हूँ कि इंडिया बहुत आगे निकल गया, इंडियंस भी बहुत आगे निकल गए। Indians are doing remarkably well as people. They are wise, mature people. Unfortunately, the forces against our nation outside continue to harp on old, beleaguered, deadbeat issues and keep raking them up for no reason of benefit to us. I think we Indians are sharp enough, they will discern it and they will move beyond that too. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर धीरज शर्मा जी आपके समय का। हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे प्रोफेसर धीरज शर्मा की। रोहतक से हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ टैग टीवी के 24/7 स्ट्रीम की ऐप्स को रॉको, अमेज़ॉन, एप्पल और एंड्रॉयड में भी डाउनलोड कीजिए, और हमारे न्यूज़ और व्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट के शोज़ वॉच कीजिए 24/7। आज की बातचीत मेरे साथ और प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.